we are discussing about the ovary today. Development of the ovary, I think I have spoken a couple of times. Now I am directly going to talk about the anatomy of the ovary. So this is the uterus, and coming from here, from the inferolateral angle, okay, below the uterine tubes, starts a ligament called as ligament of ovary. Ligament of ovary, which gets attached to the inferior pole of the ovary. That means ovary again has a formula of two: inferior pole, superior pole. Okay? Anterior border, posterior border. And superior pole is connected to the wall of the pelvis by infundibulopelvic ligament, which is also called as suspensory ligament of the ovary. So there are two ligaments in connection with ovary. One attached to the superior pole, which is called as infundibulopelvic ligament, also called as suspensory ligament of ovary. And this ligament here is called as ligament of ovary, only ligament of ovary. Now let us talk about the relations of the anterior border and the posterior border. For that we need to understand what are the boundaries of ovarian fossa. Ovarian fossa. So what is ovarian fossa? Suppose this is the ovary. This ovarian fossa lies in the lateral part of the pelvic wall. Lateral pelvic wall. Okay? Now suppose this is the ovary, and here we have the common iliacs dividing into internal iliac artery, external iliac artery, which is going to the lower limb. So this is common iliac, external iliac, internal iliac. Okay? Internal iliac. From the internal iliac, the anterior division starts the obliterated umbilical artery. Obliterated umbilical artery. So anterior border of the ovary will be related to obliterated umbilical artery, which forms the anterior boundary of ovarian fossa. Anterior boundary of ovarian fossa. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ. And then the ureters come like this to go to the bladder. So this is ureter. So posterior boundary of the ovarian fossa is formed by ureter. Ureter and internal iliac artery. Ureter and internal iliac artery. What is there in the lateral pelvic wall? Blue shirt. Shreyas. I लक्ष्य देते नहीं. What is there in the lateral wall of the ovarian fossa? Anybody? Rattle your brains. In the lateral, बोलो. In the lateral wall of the ovarian fossa, obturator nerve. हमने बोला था, therefore, if there is a swelling of the ovary, that swelling of the ovary may press upon the obturator nerve. Female may present to you with pain along the medial side of the thigh. You may keep on investigating. An actual problem is in the ovary pressing on the obturator nerve. Obturator nerve lies in the
lateral wall of ovarian fossa. Lateral wall of ovarian fossa. Okay. Now if you take a transverse section, this is the anterior part of the broad ligament of uterus. Broad ligament of uterus. आज किसी ने चुंदरी पहना है? चुंदरी 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 पहना है किसी ने? चुंदरी किसी ने? बोलना पड़ता है आजकल, लेके आओ। यही 20 साल पहले हम लोग स्टूडेंट्स को पूछते थे चुंदरी है क्या, सो ऐसे ही फेंक देते थे हमारा। इतना इकडे येतो बरा एप्रन काढ। नको तू इकडे, तू एप्रन घातलं नाही ना, तिने घातलं तरी तू इकडे, तू बस बाळा, एप्रन घेऊन ये। उभा राहायचं युटरसच्या पोझिशन मध्ये, असं 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 तिकडे थोडं कर, असं। सो the broad ligament of uterus falls like this. It is like this on the, it has an anterior layer, it has a posterior layer. The ovary is here like this, जैसे मेरा हाथ है, जरा सा पीछे। So what is happening is here, from running from ovary to the posterior layer of the broad ligament is meso-ovarium. What is that? Meso-ovarium. There are 3 parts of the broad ligament of uterus. Meso-ovarium. फिर यहाँ पे देखो, लिगामेंट ऑफ ओवरी ऐसे यहाँ पे आएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसे ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर का पार्ट है which is in close contact with uterine tubes is called mesosalpinx. और नीचे का पार्ट, बिकॉज आप लोग ने चुंदरी नहीं लाया है, ओवरी के नीचे का पार्ट इज mesometrium. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस। हाँ, थैंक यू थैंक यू। सो ट्रांसफर सेक्शन में हमको दिखता है, ये क्या है? ये ओवरी है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये क्या है? ये क्या है? meso-ovarium. बरोबर कि नहीं? meso-ovarium. What is that? meso-ovarium. ये क्या है? इधर का पार्ट mesosalpinx और यहाँ का पार्ट mesometrium. 3 parts of the broad ligament. 3 parts of the ब्रॉड लिगामेंट। आपको समझा? ब्रॉड लिगामेंट, मेरा हाथ अगर नहीं समझे, ये मेरा हाथ अगर फैलोपियन ट्यूब है और उसके ऊपर आगे एंटीरियर लेयर है, पीछे पोस्टीरियर लेयर है, उस पोस्टीरियर लेयर में पीछे की तरफ ओवरी है, तो वो ओवरी से पोस्टीरियर लेयर को जो जाता है वो है मेसोओवेरियम। मेसोओवेरियम त्या मुलीला समजलं नाही, परत येत कलश एप्रण नाही घातलं ना, चला इकडे लवकर लवकर पटकन एप्रण घेऊन यायचं। तू पण बाजूचं पण, तू पण, ते पण सब। ट्रेन लेट है, मालूम है मुझे। ओके ठीक है, उभा रहे, यूट्रस पोझिशन, यूट्रस का पोझिशन लक्ष दे आता तुझ्यासाठी। ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये उसका एंटीरियर लेयर है, ये इसका पोस्टीरियर लेयर है। ये पोस्टीरियर लेयर में ओवरी ऐसा है, जरा सा सा ओवरी इधर है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रनिंग फ्रॉम ओवरी टू ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज मेसोओवेरियम। इधर से लिगामेंट ऑफ ओवरी, इधर से सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये जो ट्रायंगल है बिलो, ये क्या है? यूट्राइन ट्यूब इज मेसोसैल्पिंक्स, और नीचे का मेसोमेट्रियम, और ये मेसोओवेरियम। अभी जो मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ,
तो मुझे ओवरी दिखेगी और ऐसा मीजोवेरियन दिखेगा, एंटीरियर अलग दिखेगा, पोस्टीरियर अलग दिखेगा। जाओ, थैंक यू। सो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर लेयर है। एंटीरियर लेयर ऑफ व्हाट? ब्रॉड लिगामेंट। ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ये मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम इसी इसमें दिखेगा, मीजो साल्पिंग्स, मीजोमेट्रियम इसमें दिखेगा। इज इट क्लियर? ओके। ये अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे फिर भी क्लियर नहीं रहेगा। ओके। मीजो ओवेरियम, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस। अभी लैटरल सरफेस पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, मीडियल सरफेस पे कुछ ड्रॉ करना, सॉरी लैटरल सरफेस पे एंटीरियरली पोस्टीरियरली मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस। चलो, ये क्या है, ये क्या है, फिर ये क्या है, और ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। बरोबर क्या है? एंटीरियरली ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। ये क्या है? यूरेटर। ये क्या है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। ये क्या है? इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक वेन। पुस्तकात आर्टरी पुढे आहे ना आणि वेन मागे। कळलं? तो यही ड्रॉ किया है मैंने। देखो, यूरेटर, आर्टरी, फिर यहाँ रहेगा वेन। यूरेटर, आर्टरी, वेन, यूरेटर, आर्टरी, वेन पीछे, और आगे आगे क्या है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। आता तू खुरपाच्या बाजूला बसलेली पोरगी, ज्याच्यासाठी मी 2 वेळा रिपीट केलं, आता तू मला सांग हे काय आहे? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। ऑब्चुरेटर ना, बस खाली, ऑब्चुरेटर। सो विथ दिस डायग्राम आपको ओवरी के बारे में हर एक जो उसके 4 पार्ट्स है उसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो आप एक एक लाइन लिख सकते हो। अपर पोल रिलेटेड टू साइड, 1 लाख रुपए का तेरा नुकसान बचा है माइकल। और लड़की का कहा जो आई थी ढूंढते ढूंढते उसको काम पे लगाया तो आईफोन आईपैड ढूंढने का, कौन थे? अरे एक लड़की मेरे को मिली और सर वो आईपैड भूल गया हमारे। मिला ना तेरे को? अपर पोल रिलेटेड टू, हाँ जोरात बोलना। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी का दूसरा नाम इन्फंडिबुलर पेल्विक। अपर पोल ऑल्सो रिलेटेड टू, यूटराइन। लोअर पोल रिलेटेड टू मयक। लोअर पोल रिलेटेड टू, हाँ क्या है? इंफीरियर पोल रिलेटेड टू, ये क्या है? ये क्या है? हाँ लिगामेंट ऑफ ओवरी, लिगामेंट ऑफ ओवरी। एंटीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू, टू सेकंड लास्ट बेंच आर्यनच्या बाजूचा। एंटीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल लिगामेंट। पोस्टीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू, हाँ यूरेटर। मीडियल सरफेस रिलेटेड टू lateral surface related to medial surface related to
अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो ओवरी है यूटराइन ट्यूब के बीच में ऐसा रहता है, ऐसा। तो आप अगर पढ़ोगे ना, मीडियल सरफेस रिलेशन यूटराइन ट्यूब, पोस्टीरियर बॉर्डर रिलेशन यूटराइन ट्यूब, सुपीरियर पोल रिलेशन यूटराइन ट्यूब, लैटरल सरफेस रिलेशन यूटराइन ट्यूब, इतनी जगह वो उसको कवर करता है, एक्सेप्ट फॉर एंटीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर पोल। अगर कुछ याद नहीं आया तो यूटराइन ट्यूब लिख लो, एक्सेप्ट फॉर एंटीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर पोल। अभी इंफीरियर पोल सुपीरियर पोल तो आपको आता है, एंटीरियर बॉर्डर आता है, पोस्टीरियर बॉर्डर आता है। दिस, अभी वो फीमेल, सपोज ये फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो उसका यूटरस ऊपर जाएगा, बराबर है। ये कहाँ तक जाएगा? जिपॉइड प्रोसेस तक, जिपॉइड प्रोसेस तक, ओके। फिर वो नीचे जब आएगा तो ऑलरेडी ये खींच गया है, ये खींच गया है। सो दिस ovary, this position is in a nulliparous female, nulliparous, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है अभी तक। While in a multiparous female, it will be like this, zoka, okay? In a multiparous female, because ये दोनों लिगामेंट अभी स्ट्रेच हो गए, ओके, दोनों लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सो मल्टीपैरस में ऐसा है, नलीपैरस में ऐसा। एक बच्चा हो गया तो ओवरी becomes almost horizontal. So this is the inferior pole which becomes medial and the superior pole becomes lateral. Now what is this ligament of ovary? आपने ग्यूबर्नाक्युलम वर्ड सुना है? ग्यूबर्नाक्युलम सुना है? टेस्टिस में ग्यूबर्नाक्युलम था, बराबर है कि नहीं? वो ऐसे टेस्टिस के इंफीरियर पोल से अटैच था और स्क्रोटम तक जाता था। वो शॉर्ट हो के टेस्टिस को खींचता था। लिगामेंट ऑफ ओवरी रिप्रेजेंट्स द ग्यूबर्नाक्युलम ऑफ ओवरी। तो एक पोल यहाँ पे इंफीरियर पे अटैच्ड है, तो उसका दूसरा एंड कहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए? हाँ, लेबिया मेजोरा, इट इज अटैच्ड टू लेबिया मेजोरा। फिर ओवरी को भी डिसेंट होना चाहिए ना, जैसे टेस्टिस स्क्रोटम में गए, ओवरी शुड आल्सो गो टू लेबिया मेजोरा। व्हाई दैट डज नॉट हैपन? If you look from the superior एंगल से अभी हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये है फंडस, ये है दो यूटराइन ट्यूब्स, ये है दो यूटराइन ट्यूब्स, ये है लिगामेंट ऑफ ओवरी। और जो ग्यूबर्नाक्युलम है वो ऐसे जाके लेबिया मेजोरा को अटैच हो रहा है। सपोज दिस इज लेबिया मेजोरा। So ovary does not follow this path to labia majora because it's between, it gets attached to the angle of uterus. Okay, the angle of uterus, and therefore the gubernaculum of ovary gets divided into two parts. One part ग्रंथ, वन पार्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्यूबर्नाक्युलम। वन पार्ट रनिंग फ्रॉम ओवरी टू यूटरस एंड यूटरस टू लेबिया मेजोरा। सो ओवरी टू यूटरस फॉर्म्स लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड यूटरस टू लेबिया मेजोरा फॉर्म्स राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस। इसके लिए inguinal canal, the one of the content is round ligament of uterus, which is gubernaculum. In males also, this testis, the gubernaculum passes like this through the inguinal canal down, but because testes go down, now the gubernaculum is not there.
तो ग्यूबेर्नाक्यूलम डिसेक्टर, बिकॉज वो शॉर्टन होकर टेस्टिस को ही खींच लेता है, बट इसका ग्यूबेर्नाक्यूलम अभी भी रहता है. ओके, शेवटच्या बेंच कोपऱ्यातला मुलगा. So round ligament of uterus is formed from copra, second last bench, formed from gubernaculum of ovary. So what are the two things? तुझं नाव काय? तुझ्या मागचं भारत. What are the two things that are derived from gubernaculum of ovary? Hassan, what are the two things? Gauze किधर? Round ligament of uterus. और तमन्ना, what is the second thing? Ligament of ovary. Now we are talking about infundibulopelvic ligament. One of its content is ovarian artery. Ovarian artery. Ovarian artery is content of समृद्धि कुठे छोड़ के आएंगे तो रोहित के बाजू का लड़का. Ovarian artery is a branch of abdominal aorta, abdominal lateral branch. वो L2 L1 L2 के लेवल पे निकले, वो वहां से आएगा इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट में से अंदर जाएगा और लैटरल 1/3 ऑफ यूटराइन ट्यूब को सप्लाई करेगा. लैटरल 1/3 एंड यूटराइन आर्टरी विल गो लाइक दिस एंड सप्लाई medial 2/3. So uterine tube is supplied lateral 1/3 by ovarian artery and medial 2/3 by uterine artery. Medial 2/3 uterine artery, lateral 1/3 ovarian artery. So ovarian artery supplies ovary plus lateral 1/3 of uterine tube. Uterine artery supplies uterus plus medial 2/3 of uterus plus medial 2/3 of uterine tubes. बरोबर? Now what are the contents of the broad ligament of uterus? एक तो यूटराइन ट्यूब है, दूसरा आर्टरी यूटराइन आर्टरी, तीसरा थोड़ा ओवेरियन आर्टरी भी थोड़ा सा है, और मीजोनेफ्रिक डक्ट. मीजोनेफ्रिक डक्ट हमने सुना है. व्हाट डज मीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म? यूरेटर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स. एंड मेल्स में और कुछ फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है मीजोनेफ्रिक डक्ट? द वास डेफरेंस, द डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स. बरोबर? अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस. फीमेल्स में ये सब नहीं होता है. तो डक्ट ऑफ गार्डनर करके वो रह जाता है ब्रॉड लिगामेंट. Okay, and the tubules they remain as ipooforon. ipooforon यहाँ पे दिखेंगे ऐसे, जो कि मेल्स में वाजा एफरेंशिया कॉज कर रहे थे ना मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, वो फीमेल्स में ipooforon और paraooforon ऐसे फॉर्म करेंगे. पुस्तकात ब्रॉड लिगामेंटचे कंटेंट दिलेत. हाँ वाच जोर से. हाँ, ligament of ovary and round ligament of uterus, uterine and ovarian artery, ovarian nerve plexus, uterovaginal nerve plexus, ipooforon above the ovary,
गार्डनर्स डक ऐसी रहेगी, पैराओफोरा. So Hippooforon, paraophoron are from the tubules and Gardner ducts is from the mesonephral duct. Okay. So this is about the ovary, applied anatomy. Congenital anomalies, yeah, ovary position, all such things will be there. Investigations of the ovary are done mostly by the USG, ultrasonography. Medical problems in females. Any abnormality in the ovary causes abnormal hormones that can lead to abnormalities in body and the mind also. Okay, therefore this menopause, menarche, why teens become so they revolt against the parents because of the hormonal changes. They also don't understand how they misbehave, why they misbehave. And after menarche, after those hormones are gone, some females they behave abnormally. So suddenly all these hormones which are secreted by the ovary are gone. Okay, so ovary has not only role in reproduction, but in the female it maintains the health, both physical and mental. सर्जिकल कॉमनेस्ट थिंग PCOD, आपने नाम सुना रहेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD, लास्ट में ओवेरियन कैंसर. हमने एक ट्यूमर सीखा था ब्रेस्ट कैंसर में कि ब्रेस्ट कैंसर स्पिल्स इनटू द एब्डोमेन. कौन सा ट्यूमर था वो? क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर. एंड इट स्पिल्स inferolateral part, the lymphatics are connection below the diaphragm and it may spill upon the ovary also at time to form Krukenberg's tumor. So that's all about the ovary. One important thing is in oogenesis. In oogenesis, when does the oogenesis get hanged? When does oogenesis get hanged? Primary oocyte, पहले तो oogonia, then primary oocyte से secondary oocyte के बीच में क्या होता है? हाँ? कभी हैंग होता है? Of meiosis 1, of meiosis 1. आप दोनों लेट कमर से इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. अरे आ जाओ. लेट आने का नहीं ना फिर. अरे ट्रेन तो जल्दी निकलने का ना. खड़े रहो साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो. हाँ ऐसे. तो दिस इज meiosis 1. meiosis 1 में जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना क्रोमोसोम्स का, सो ये ऐसे क्रॉस होके नाउ दिस गेट्स हैंग्ड. एक्चुअली ये सेपरेट होके ये सेल में जाना चाहिए, ये क्रोमोसोम ये सेल में जाना चाहिए, बराबर है, meiosis 1 क्रॉसिंग ओवर के बाद. लेकिन द meiosis 1 गेट्स हैंग्ड कभी इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब फीमेल अभी तक माँ के गोद में है तब तक प्राइमरी oocyte to secondary oocyte gets hanged. And when does this get released? Before ovulation. I say hanged state में there are thousands of cells. Only 1-2 get released. Okay, and then this goes in the first polar body, this goes in the secondary oocyte, and secondary oocyte is released. तो ये फीमेल के सपोज एज ऑफ 13-14 चालू हो गया.
Okay. So then, at suppose age of 21, she gets married. Suppose 21 she gets married, मतलब 21 ईयर से ये दोनों साथ में हैं. ठीक है, शादी हो गया, फिर वो सडनली एक एम्बिशियस फीमेल है, उसको तो बच्चा भी चल रहा है, तो 40 साल हो गया, 45 ईयर्स. 45 पे she decides to have a kid. 45. दैट मीन्स ये दोनों ऐसे हाथ पकड़ के दोनों क्रोमोसोम्स 45 ईयर्स एक साथ हैं. फिर जब हम उनको बोलते हैं चल तू सेकंड पोलर बॉडी में जा, तू सेकेंडरी उस साइड में जाओ, है ना यार, अभी हम जिधर जाएंगे साथ में जाएंगे. दैट इज द रीजन वी गेट. सो ये दोनों या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे. 45 में चिपक गए हैं हाथ, इतना पकड़ के बैठे हैं. 45 ईयर्स हो गया ऐसे खड़े, अभी नहीं, अभी हम लोग साथ में जाएंगे. Therefore, with increased advanced maternal age, we find children born with the numerical anomalies. Because कोई तो क्रोमोसोम में एक पेयर तो दगा देता है, एक मिनिमम, एक दो भी, तीन. Okay, so that is, thank you so much. That is why very important that late pregnancy should be avoided. Thank you so much.